Like to discuss on some topics of geology. What is geology? Geology is the science of the earth, where geo means earth and logy means study of science. It deals with the study of origin, age, interior structure and history of the earth, evolution and modification of various surface features like rivers, mountains and lakes. It deals with the material that makes up the earth. Geology provide a systematic knowledge of construction materials and their occurrence, formation, durability, strength, hardness, and their uses. Before starting any major or minor civil construction at place, a detailed geological report, which is accompanied by geological maps and section, is prepared. The detailed geological report contains types of rock that comes under petrology, types of formation of geological structure, and physical properties of the earth. Now, the next topic is importance of geology in civil engineering. This topic will be well explained by the Amrit Raj Gupta. Thank you. Good morning, respected teachers and my dear friends. My name is Amrit Raj Gupta, and Amrit Raj Gupta is presenting in front of you about the topic is my topic is importance of geology in civil engineering. Geology plays a very important role in field of civil engineering. It provides knowledge about materials used for construction. Its knowledge is helpful for construction dam. For a civil engineer project is to be successful, the engineers must understand the land upon which the project built. Geological maps help in planning civil engineering project. It provides information about the structure deposition of rocks types in the proposed area. For design of highways and roads, before constructing roads, bridges, tunnels, tanks and buildings, selection of site is important from the point of stability of foundation. Geotechnical engineers needs knowledge about geology for digging work. Knowledge about the work is very necessary for tunneling and constructing roads. Now the next topic will be explained by Mr. Amol Kumar. Amol Kumar. Respected teachers and my all dear friends, I am Amol Kumar presenting on engineering geology topic faults and its type. Faults. It may be defined as undulation bands or curvature developed in the rocks. This figure is called faults. Type of faults: symmetrical faults, asymmetrical faults, overturn faults, chevron faults. Symmetrical faults. These faults are also called as lateral and upward faults. In such faults, axis of plane is essentially vertical. Asymmetrical faults. It is one in which the axial plane is inclined. Overturn faults. These are faults which inclined axis of plane. Chevron faults. In chevron faults, in which limbs are at angles. सिमेट्रिकल फोल्ड्स में हम लोग एक्सिस ऑफ प्लेन वर्टिकल लेते हैं और असिमेट्रिकल फोल्ड्स में हम लोग यस यस सिमेट्रिकल फोल्ड्स में हम लोग लेंगे एक्सिस ऑफ प्लेन वर्टिकल लेंगे और सिमेट्रिकल फोल्ड्स में हम लोग एक्सिस ऑफ प्लेन को इंक्लाइन प्लेन पे लेंगे और ओवरटर्न फोल्ड्स में हम लोग एक्सिस ऑफ प्लेन को टिल्ट करेंगे और ओवरटर्न चेवरन फोल्ड्स में हम लोग
अंदर को साफ हो गया सर। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट टॉपिक भी एक्सप्लेन बाय त्रिभुवन कुमार। First of all, good morning to all of you, respected teachers and my dear friends. Today I discuss this topic petrology. तो हम जानते हैं पेट्रोलॉजी होता क्या है। पेट्रोलॉजी, पेट्रो मतलब होता है रॉक और लॉजी मतलब स्टडी, यानी जिसमें हम रॉक्स के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी जो द अर्थ क्रस्ट इज आल्सो पैरेलल विच इज फेयर, मतलब जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो पाया जाता है लिथोस्फीयर इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो उसमें रॉक्स जो डिफरेंट टाइप्स का होता है, उसमें हम जो पेट्रोलॉजी जो बताता है वो उसके स्ट्रक्चर, टेक्सचर, कंपोजिशन, अपीयरेंस एंड दिस टाइप्स बताता है। तो सेकेंड जो है हम लोग का वो है टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स, सेकेंड है मेटास्फोरिक रॉक्स और थर्ड है सेडिमेंट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह जानते हैं कि इग्नियस रॉक्स होता क्या है एक्चुअली। इग्नियस रॉक्स जो होता है, अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो पोटोस्फीयर सॉरी जो ज्वालामुखी होता है, जब वो मतलब निकलता है तो उसमें जो लावा जिसको बोलते हैं वह जो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड फॉर्म हो जाता है। तो वही सॉलिड फॉर्म जब वो मतलब कि जब कूल होता है तो वो इग्नियस मतलब रॉक के रूप में ले लेता है। सेकेंड है मेटास्फोरिक। मेटास्फोरिक होता क्या है, जैसे जो ये भी एक तरह से इग्नियस का ही पार्ट है। जैसे कि इग्नियस रॉक जो ठंडा होता है उसमें से मेटास्फोरिक जो होता है मतलब कुछ कुछ कण, जैसे कि कभी गर्मी कभी बरसात, उससे जो टुकड़ा जो नीचे रहता है वो नीचे अर्थ क्रस्ट में अपना मतलब जम जाता है, तो उसी को जो मतलब एक रूप ले लेता है जो कि कहलाता है मेटास्फोरिक रॉक्स। थर्ड है सेडिमेंटरी। सेडिमेंटरी रॉक्स एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि हम किसी भी मतलब रॉक्स को मतलब जैसे जो मतलब ज्वालामुखी जब होता है तो उसके नीचे जब रॉक्स मतलब ये मतलब जब सॉरी सर उसके जो टुकड़े होते हैं, टुकड़े को मतलब एक मतलब बहुत दिन होने के बाद जब वो नीचे परत पर जम जाता है तो उसे सेडिमेंटरी कहते हैं। थर्ड है, अब हम देखते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पेट्रोलॉजी का क्या है। तो द कंपोजिशन एंड टेक्सचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स primarily contribute of their strength and durability. Rock based on their structural can be used for foundation for dams, tunneling and other construction material. जैसे कि कोई कंपोजिशन से टेक्सचर होता है उसका स्ट्रेंथ ऑफ ड्यूरेबिलिटी पे वो डिपेंड करता है। जैसे कि हम डैम्स हुआ, टनलिंग हुआ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होता है। Hence, it is most important branch of geology from civil engineering point of view. Thank you. साउंड बोल्डनेस रखिए, ठीक है, माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी समझाए बोल्डनेस में समझाइए। My dear respected teacher and my dear friend, good morning. My topic is geological hazard. A geological hazard is one of the several types of the adverse geological condition capable of the causing damage or loss of the property and life. And its type is landslide, earthquake, flood, tsunami. A landslide is a movement of a soil and rocks down a slope. Earthquake, a sudden phenomena include avalanche. Flooding is the overall of the water onto land. Tsunami is the series of the powerful occurrence surge caused by movement of a part of the series of flood. Thank you. Nice, sir. Thank you. और एक्सप्लेन भी कीजिएगा अपना लैंग्वेज में, जैसे आप एक लाइन उसको पढ़ दिए, रीडिंग कर दिए, उसके बाद एक्सप्लेन भी कीजिएगा अपना लैंग्वेज में। तो नहीं इंग्लिश में ही करना है, अपना लैंग्वेज हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। स्लाइड पे जाइए सर, कौन सा स्लाइड बोल रहे हैं? पेट्रोलॉजी हो गया, हां सर खत्म हो गया। पेट्रोलॉजी पे Igneous rocks. एग्जांपल इंडियस रॉक का कोई एग्जांपल, इंडियस रॉक का एग्जांपल होगा ना।
से आते हैं। ये से पूरा कैटेगरी है, ठीक है, बड़ा कैटेगरी, उसके अंदर बहुत बात नहीं, वो कौन सा हो? और मैं बता सकता है इसमें। तीसरा वाला सेडिमेंट्री का, सेडिमेंट्री का कोई एग्जांपल हो तो कोई एक एग्जांपल, जो फोटो में नहीं वो कोई एक एग्जांपल है इसका, उस लोग का बता दो। कोई भी हो, इनिशियल मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री उसका भी एक एग्जांपल कोई नेट पर भी सर्च करके बता, कोई भी बता सकते हैं, नेट पर भी सर्च करके कोई भी बता सकता है पांचों में। एक लड़का इंग्लिश का बताएगा, दो एग्जांपल, मेटामॉर्फिक का दूसरा बताएगा, तीसरा जो है सेडिमेंट्री का बताएगा। नेट है तो नेट पर सर्च करके बताओ जल्दी से। ठीक है, ठीक है, सीख रहा है। आप लोग भी कर लीजिए। आप लोग सर्च करके बताओ कि ये तीनों रॉक में जो डायग्राम जिसका फोटो है ये कौन सा रॉक है, इसे सर्च कर सकते हैं। आपको देख करके स्ट्रक्चर को देख करके बताना है कि इग्नियस रॉक्स में वो कौन सा इग्नियस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक में वो कौन सा मेटामॉर्फिक, टेक्सचर को देख करके बता सकते हैं। सर हाँ, अब इग्नियस का जो है एग्जांपल वो ग्रेनाइट हो गया, ठीक, फिर पास आउट हो गया, हाँ, और फिर बेसाल्ट, ये सर हाँ, ओके, ठीक है। तो इसमें कौन सा रॉक्स है बताइए, इग्नियस में वो कौन सा इग्नियस है, ये कौन सा इग्नियस में टाइप्स ऑफ बने, आप जो बोल रहे हैं कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट है, हाँ, ग्रेनाइट देखने में कैसा होता है, ग्रेनाइट होता है सर, ग्रेनाइट है, नहीं तो ये इग्नियस का टाइप दिखाया है। हाँ, तो टाइप से मतलब ये क्या कहते हैं, आप कौन सा बोल रहे हैं, इसको ग्रेनाइट बोले ना, ये ग्रेनाइट हुआ, बेसाल्ट हो गया, स्पेलिंग ठीक है। अच्छा, आपको आपका रोल नंबर बताओ। आपको मेटामॉर्फिक पता चला, रोल नंबर बताओ। हाँ, ये नेट नहीं चल आप ही लोगों का ना है ये ग्रुप, टाइप्स ऑफ सेगमेंटिंग में नहीं पता चला, फोल्ड और फॉल्ट आगे आगे बढ़िए, फोल्ड और फोल्ड, फोल्ड एंड फोल्ड में क्या डिफरेंस है? देखिए अब आगे बढ़ाइए, किसी को स्लाइड आगे बढ़ाइए, फोल्ड फोल्ड निकालिए, हाँ, फोल्ड और फॉल्ट में क्या है? हाँ, फोल्ड के बारे में पता है, फॉल्ट फॉल्ट बोलो। फॉल्ट में क्या है? अच्छा फोल्ड होता क्या है, कौन बोला है, फोल्ड बेंड इन द रॉक स्ट्रक्चर, फोल्ड क्या होता है, रॉक में से बेंडिंग होता है, फोल्ड, फोल्ड भी आई थिंक स्लाइडिंग होता है। सर उसका कर्व कर्व जो होता है ना बेंड धीरे धीरे कर्व फोल्ड में कभी नीचे अगर इसमें डीप होता है और कर्व, फिर फोल्ड में से ब्रेक हो डीप जाता है, एंड स्ट्राइक आप क्या 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 ब्रेक हो जाता है सर। कर्व में आ जाता है, कर्व में आ जाता है। ठीक है, आप लोग जाइए, फर्स्ट प्रेजेंटेशन है सर, ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन है सर। फर्स्ट प्रेजेंटेशन है सही, लेकिन इसी टॉपिक पर आपको घर से कहा गया है करने के लिए, तो बहुत सारा लेक्चर अवेलेबल है, 4 दिन से आप क्या कर रहे हैं, 4 दिन से तो वही टॉपिक पर आपको तो बताना था। चलिए राहुल राज रोल चलिए, नंबर ठीक है, 1915 19 125 125 अमृत राज गुप्ता 1950 19 150 अमोल कुमार 19149 1949 विभोम कुमार 19155 191 आशीष कुमार 19148 19 ठीक है जी। ग्रुप नंबर 1 आनंद सभाकर, प्रीति कुमारी, दक्षा कुमारी, निरंजन कुमार रॉय, आदित्य राज, मेरा Respected professors and all my dear friends present here, good morning to all of you. I am Anand Prabhakar and my group number is G1. आप भी लाउडली हमारा भी क्या साउंड जो है लाउडली आप भी निकालिए, Hello. जीवन है,
Yes, sir. Our topic is importance of geology in civil engineering and major branches of geology. And here is our group information. Here are our group members. Let us start with the topic. Today, we will discuss about the importance of geology in civil engineering and the major branches of civil engineering. Major branches of engineering geology. First, let us understand the importance of geology and what geology is. Geology means the study of earth. Geology is made from two Greek words. First word is Greek word geo and second word is logos. Geo meaning the earth and the logos meaning the study. So, in the geology, we deal with the study of earth and it deals with the multiple aspects of earth, starting from the origin and place and structure of earth. In geology, we try to determine the age and study the structure of earth by different scientific aspects. It includes the study of surface, subsurface, and the marine area also. In this slide, I have tried to show the surface and subsurface and as well as the marine surface of earth that we study in the engineering geology. We can see the crust at the top, the mantle below it, and in the last we have the core, earth core. And at the top we can see the oceans, which comes under the marine area. Okay. Okay. Further topics, further slides will be discussed by our teammate Preeti Kumar. Good morning, everyone. Respected teacher and my dear classmates. Myself, Preeti Bharti. Now I will discuss about geology and earth science are different. Yes or not? Yes, they are different. Geology and earth science. Geology is the scientific study of the origin, history, and structure of the earth. And the earth science. Earth science is the broader field that refer to the field of science dealing with planet Earth. The term geology is older than earth science, and the earth science was introduced later, does not involve meteorology, oceanography, and paleoclimatology or hydrology. Earth science involves areas such as meteorology, oceanography, and paleoclimatology and hydrology. And next, the importance of geology in civil engineering. Majority of civil engineering structure are made on the Mother Earth, and this is the most important reason why geology is important in the domain of civil engineering. सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर अर्थ पे बनता है और इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है जियोलॉजी इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए fundamental geology is much important that it is included as a subject in the fundamental course of civil engineering. Fundamental जियोलॉजी फंडामेंटल जियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए सिविल इंजीनियरिंग में इसे एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जाता है good knowledge of geology is required to make any civil project successful and for selecting a good location for civil project. सिविल प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने और सिविल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सही स्थान चुनने के लिए
जियोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक है। Geologists study the stability of land over which project is proposed. Then only civil projects are checked whether the site is stable enough to support the project. For choosing a location, some steps are followed. Preliminary investigation यूजिंग प्री एग्जिस्टिंग डाटा। इसमें हम लोग डाटा चेक करते हैं। और डिटेलिंग जियोलॉजिकल सर्वे, फोटो जियोलॉजिकल सर्वे, अप्लाइड जियोलॉजिकल सर्वे, बॉडी बोरिंग, ड्रिलिंग, excavation etc for quantitative detail and critical point of location। इसमें हम लोग सॉइल का टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग बनेगा तो वो लोड ले पाता है कि नहीं। और soil and rock testing to exit suitability and the mechanical properties। Now further slide discuss my teammate Abhilasha। Thank you, sir। Good morning, teachers and my dear friends. I self Abhilasha Kumari. I'm going to start my topic, major branches of geology. Geology itself is very vast subject and hence it is further divided into branch in order to study in details and for simplicity। इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला फिजिकल जियोलॉजी, जियोमोर्फोलॉजी, मिनरल जियोलॉजी एंड पेट्रोजियोलॉजी, हिस्ट्रिकल जियोलॉजी एंड इकोनॉमिकल जियोलॉजी। First, physical geology. It's deal with the origin, development and various features of the earth and also with internal structure of earth, internal agents, volcano and earthquake, and external agent, winds, water and ice play important role while studying in this field. Let's see the image, inner and outer. Now, I will now further in slide discussed by my teammates Aditya Raj. Good morning, respected teacher and my dear and I will discuss geomorphology. This branch deals specifically with the study of surface features of Earth, primarily of land surface. Detailed investigation regarding development and deposition of mountain plains, valley basins and various other land forms associated with them falls under geomorphology. This also includes the structure in evolution of these land forms through space and time. It is a branch mineralogy. It is a branch of geology which deals with formation, occurrence, aggregation, properties, and usage of minerals. It is further subdivided into 3 branches: crystallography, optical mineralogy, descriptive mineralogy. Thank you, sir. Good morning, respected teacher. Myself, Priyanjan Kumar. Petrology is dealt with a study of rocks, their mode of occurrence, composition, texture, and structure, geological and geographical distribution on the earth. It is further subdivided into 3 branches: petrology, igneous petrology, sedimentary petrology, metamorphic petrology. Historical geology. It deals with past history of Earth and features associated with it and
Rocks are treated as the page of Earth history as they contain enough evidence of nature and time of their formation, composition, constitution, magnetism, and structural deposition. In many cases, fossils which, when analyzed scientifically, reveal doubt about the past events since their formation. It is further subdivided into three branches: petrology, paleogeography, paleontology, stratigraphy. Now, I'm discussing the economic geology. When it comes to the this term is self-explanatory as it is economic. It means it deals with the money. When it comes to the economy, it deals with the study of those minerals which, when extracted, that can benefit us, that from which we can get benefited. Okay, this can include deposition of fuels like coal, petroleum, natural gases, etc. Here are the references that I used during the Good morning, everyone. Myself, Raksha Kumari, and at the last of this presentation, we reached the conclusion that geology plays a very important role in civil engineering domain, and it is much important that we cannot go through civil projects completely without having prior knowledge of it. Geology is very vast subject, and so this is further subdivided into branches for reducing the complexity and classification purpose. And any query or questions are welcome. Thank you. ईमानदारी से अच्छा कौन बनाया था पीपीटी कौन बनाया था दूसरे का ग्रुप डिस्कशन क्यों किया पता है पीपीटी क्या है तुम नहीं बता पड़े सब पीपीटी रीड कर रहे डिस्कस किया सुबह में डिस्कस किया तो इसको समझ में नहीं आया तुम लोग का पीपीटी एक बार आपका सेकंड ग्रुप पीपीटी सबका बनाया सबका पीपीटी नहीं बनाया मतलब सबका कंटेंट सेम था सबको अलग अलग चला सब पत्र भी बनाया था ठीक है सबका कंटेंट सेम कहा जा रहा नहीं सब अपने ग्रुप का बनाया एक ग्रुप अच्छा चलो स्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी के पहले वाला जियोमॉर्फोलॉजी के पहले वाला स्लाइड इसको समझाओ इमेज है सर ये तुम मत समझो बाकी लोग वो क्या नाम है उसका वो कार्ड नंबर पे आप पीपीटी में ना अभिलाषा हां आप ही करता है तुम्हारा ही था ना ये जोर से वैसे लाउडली आवाज Inner parts and outer parts. बात नहीं क्या चीज डायगर पार्ट आउटर पार्ट अच्छा वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो है वो क्या है डाइवर्जेंट दो पॉइंट है एक डाइवर्जेंट है एक कन्वर्जेंट है उसका क्या नाम क्या है है ना डाइवर्जेंट है ना कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री भाई क्या कोई भी ग्रुप में आनंद के अलावा कोई और बताओ बताओ क्या नाम है सेकंड नंबर पे जो है हाँ उनकी पार्टी बताओ अच्छा अर्थ का जो डीपेस्ट पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं क्या हरियाणा ट्रेंच बोलते हैं वहां पे देखो कि लिखा हुआ है ट्रेंच फिगर को तुम लोग अच्छे से समझना ठीक है बहुत कुछ है जियोलॉजिस्ट का वर्क और क्या है सिविल इंजीनियरिंग के अलावा कौन से फील्ड में और भी
जियोलॉजिस्ट का सर इकोनॉमिकली जब हम लोग बात करें तो एक्सकेवेशन में यूज होता है, गोल्ड डिगिंग या फिर मिनरल्स को एक्सकेवेट करना। और कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे देखें तो वो लोग सॉइल टेस्टिंग करते हैं, सॉइल क्वालिटी को रीड करते हैं क्वांटिटेटिव बेसिस पे। यस सर, रॉक का स्टडी करते हैं। वो कार्बन डेटिंग के जरिए हम लोग एज का पता लगा सकते हैं। रॉक को ऐसा बोला जाता है कि वो पास्ट हिस्ट्री है किसी भी जगह का। रॉक शोज द पास्ट हिस्ट्री ऑफ एनी लोकेशन। तो रॉक्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें क्या कंपोजिशन है, कंपोजिशन में क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं, बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, तो उनका हम लोग स्टडी करते हैं और रेडियो एक्टिविटी से चेक करते हैं कि वो कितना डिके हुआ है, टाइम के साथ वो क्या है घटता जाता है। तो उससे हम लोग उसका टाइम पीरियड पता लगाते हैं कि वो कितने साल पुराना है। ग्रुप बी, सुमन कुमारी, मनीषा कुमार सिंह, अनुराग वर्मा, मनीषा कुमारी, पंकज कुमार, उत्तम कुमार। Good morning, sir, and the respected teachers, and all dear my friend. Myself, Manisha Kumari, my branch is civil engineering from 2K19 batch. My Yes, sir. Presentation of the structural analysis. Rock mechanical structural analysis में कब start है? Structural analysis ऐसा? Copy paste किया है? हाँ? Presentation of चलो शुरू करो, चलो शुरू करो, चलो। इसके अंदर जियोलॉजी है ना? आगे बढ़ो, प्रेजेंटेशन तुम्ही लोग का है ना? Good morning, respected teachers, and all dear my friend. Myself, Manisha Kumari, my branch is civil engineering from 2K19 batch. I am here present for presentation. My topic is rocks mechanism. My teammate participants Manish Kumar Singh and Suman Kumari, Anurag Verma, Uttam Kumar and Pankaj Kumar. I will discuss the following contents. Introduction to mechanics, classification of rocks, engineering property of rocks, laboratory test of rocks, and failure of rocks. Introduction to rocks mechanics. Why rocks mechanics? Rock mechanics. Rocks, natural substance and mechanics. Study of field and its effect. Why need we need rock mechanics? The study of rock mechanics, behavior in the solid state, and
under various environmental and internal conditions. A rock material is an aggregate of minerals particles, the physical and mechanical properties. In physical properties, mainly include hardness, luster, specific gravities, and convex fractures. In mechanical properties, mainly include elastic modulus, Poisson's ratio, and the strength of elasticity. And next topic, scope of rock mechanics. Evaluation of geological hazard, landslide, seismic, and selection of construction material, selection and layout of construction site, design of um, structure stabilities, and design of blasting program, blasting operations. Now, study of rock deformation at high temperature and pressure. In scope of mechanics, analysis of stability, application of rock mechanics. रॉक मैकेनिक्स का एप्लीकेशन क्या है? डीप एक्सकैवेशन में मेनली होता है माइंस, टेम्पोररी एंड परमानेंट, टनल्स, अंडरग्राउंड एंड चैम्बर्स, प्लांट वाटर एंड डिस्पोजल्स. एनर्जी डेवलपमेंट, ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ रॉक मैकेनिक्स में ही आता है. इसमें एनर्जी डेवलपमेंट में जो पार्ट है वो है पेट्रोलियम, जियोथर्मल्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड वेस्ट डिपोजल्स में. इसमें न्यूक्लियर पावर में ही आता है. और एनर्जी स्टोरेज कैवरेंस मीन्स रॉक्स जो है, मतलब अर्थ से जो भी एनर्जी या फिर या बाहर जो होती है वो मतलब हाई पावर में उसको स्टोरेज के लिए मतलब हाई क्वालिटी रॉक्स का यूज मतलब करते हैं उसमें. एंड नाउ इम्पोर्टेंट ऑफ रॉक मैकेनिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग. मेजॉरिटी ऑफ infrastructures project including dams, tunnels, road and protection of slope. Thank you so much. And next presentation we will discuss Suman Kumari. Thank you so much. Manisha Kumari. Good morning, teacher. Good morning, respected teacher and my dear students. My topic is classification of rocks. Types of classification of rocks. Three types of rocks. First of all, igneous rock. Second, sedimentary rock, and third, metamorphic rock. First, sedimentary rock, made up of a smaller rocks cemented together. Sometimes have fossils, usually have layers. Examples are sandstone. Igneous rock, some were once liquid magma that erupted from volcanoes. They cooled very quickly. Others were once liquid magma, but they did not erupted from volcanoes. Instead, they cooled slowly underground. Third, metamorphic rock. From when igneous, sedimentary or other metamorphic rocks are heated and are secured for forming a new rock types, usually has interlocking crystals and layer. Types of igneous rock. Igneous rock is two types. First of all, intrusive and second extrusive. First, and it is formed by
lava up ground, and second extrusive. Extrusive, it is formed by lava below ground. Metamorphic loss example from when is igneous, symmetric, or their metamorphic rock are heated and or secured, forming a new rock types, usually has interlocking crystals and layer. This can there happen underground or above ground. Underground, high pressure and heat. Above ground, volcano erupting. Example, slate, marble. Thank you. Next topic discussion. Uttam Kumar. Good morning. Good morning, respected teacher and my dear friends. Myself, Uttam Kumar. I will continue the next topic, engineer properties of rocks. Engineering, or often called mechanical properties, deals with materials' response to tension, compression, shear, and repeated combined action of these three. On the other hand, engineers have to consider physical and chemical properties in their designs and applications. Physical properties may be index properties which describe the rock's materials and help in classify them. On the other hand, mechanical properties may be known as strength properties as they give information. Next slide. Engineering properties of rocks or mechanical properties of rock. Strength. Load bearing capacity. How much load it can be bear before fails. Strength are two types: compressive strength and transverse strength. Compressive strength. It is maximum load bearing capacity when load is applied in uniaxial direction. Laboratory test. Next slide, transverse strength. It is ability of material of bend before it breaks. It is defined as the capacity of stone with withstand bending loads. Such load are only involved in situations where stone are commonly used. Thank you. Next slide. I next next topic discuss is Anurag Verma. Respected professor and my dear friends, good morning all of you. Today presented porosity. My topic is porosity. Porosity is an index of the amount of groundwater that can be stored in the structured formation. Porosity is the ratio between the total void or porous of particles rock to the total volume of same rock. It usually expressed in percentage of the bulk of volume of the rock. There are two types of porosity: primary porosity or secondary porosity. Primary porosity before the formation or secondary porosity after the formation. What is porosity and permeability? Non-porous space. That's all. Non-porous space or uh, non-porous or non-permeable. That is so that gap between the rock and non-connected porous space. That is between the space between the rock. Non-porous permeability. A connected porous space, a porous permeability. There is a many gap between the rock. That's in water. A permeability is the capacity of porous medium that transmit water or liquid that is relative say
to fall of liquid under unequal process. Uh, it a factor how a rock will act as a source of water for a well. Uh, a rock priority when the rock has got many connected porous space. Absorption value. Absorption value is the capacity of a stone to absorb moisture when immersed in the water for 72 hours or till saturation. This is expressed in percent term of original dry weight of the sample. Thank you. Next presenter, Manish Kumar Singh. Respected professors and my dear friends, good morning to each and everyone. Myself, Manish Kumar Singh, and I am going to give my view on the lab test of rocks. Just to begin with the slide, if I have to do the testing of density of rocks, it is very simple. Just take a number of stone, or you can take 2 stones. Take a transparent glass or bottle, put the stones into the water. The stone which sinks, it suggests that it is more denser, and the stones which floats, it suggests us that it is less denser than the rock that is sand. Now, if we have to know the durability of rock, just use some sandpaper. Take sandpaper and rub it with the stone. If you get some dust out of the rock, it suggests that the rock is not much durable. If a rock dust comes off, it suggests less durability. Next, permeability or impermeability. To know the permeability of rocks, take rocks and put it into a clear container full of water, or you can put in empty container. Permeability, in this, put the rocks. After some time, you will get some bubbles around on the surface of the container. It will tell you that it is permeable rock. If bubbles don't come out of, or you can not see the bubbles on the surface of the container, it will tell us that it is not permeable, that is impermeable. To know whether the rock is hard or soft, just scratch the rock with your fingernail. If you see an indentation or mark on the rock, you will find that it is not much hard. If you are scratching your fingernail on the rock and you are not getting any mark on the rock, it will suggest us, or it tell us about much harder. Next, point load test. It is a laboratory test. We use it to know how much rock or a rock sample can withstand the point load which is applied on it. What are the benefit of point load test? The benefit of point load test is, with the help of point load test, we are knowing how much it can withstand compressive strength or the maximum load before it fails or it fractures. So it will help us to put the required rock or rocks in a construction. This is an example of point load test which is being taken in lab. We are putting a cylindrical rock specimen under the loading machine. We are applying load on the rock sample uniaxially, and when we apply load, there comes a time when rock gets fractured. As you can see in this slide, there in laboratory, scientists or
lab had do some lab test, and they have found the some tabular data of some respected rock dolomite which can withstand 6 to 11 megapascal limestone. It is 0.2528 shale, 0.2828, and volcanorex can withstand a maximum load of 3 to 15 megapascal. Uniaxial compressive strength test. Normally on the site we have no, we cannot do this, but in the lab we can do. In this, simply we collect some rocks which is weighing 450 to 550 kg. Then we take a clean and empty drums and record the measurement of it. Then we place the specimen that we have taken in the oven, and we dry so that all the moistures which are in this can be dried. Then we took the sample of rock and in the drum, and we weigh, we take the record of weight, and then these drums filled with the rock are put in the tank, and it is connected to the motor drive unit, and it is then the setup is placed in water at 20 degrees Celsius, and the water level is kept at 20 mm below the drum axis, that is longitudinal axis of drum. As it is connected to the motor drive unit, then we have we start the motor, and it is driven up to 10 minutes. When dried, we calculate the record of the mass. This calculation we get some data, and data is used to know the compressive strength of rocks. That's all about lab test of rocks. Next slide will be discussed by the Mr. Pankaj Kumar. Good morning to all of you. My dear discuss about the failure of the rock. Before that, I would like to ensure that what we have to discuss till now. First of all,